वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी एनालिसिस ऑफ द सिलेबस. इट्स नॉट ओनली द एनालिसिस ऑफ सिलेबस. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी फॉर द JkSSB सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स यूजेज, वेरियस फेसेट्स ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड इट्स यूजेज. अब आपके दो टॉपिक्स इसके बाद रहते हैं. वन इज द इंग्लिश, सेकंड इज द इकोनॉमी. एंड जो आपका इंग्लिश है आई एक्सप्लेन दैट. उसके बाद जो आपका इंडियन इकोनॉमी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कहा है सर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी का मैं 1 घंटे का आई अपलोड 1 hour लेक्चर ऑन द इकोनॉमी while I'll explain all the things which are required for your examinations. So today I'm going to teach you the basics of computers. इसमें क्या क्या स्टडी करोगे आप, और जो आपकी बुक है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो. ये वाली बुक जो क्रिएटिव माइंड्स व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप है, इवन की टेलीग्राम पे एक पेज है, वहां पे मैं ये बुक अपलोड कर देता हूँ. स्टडी द लिमिटेड चैप्टर्स ऑफ दिस बुक. यू हैव to take 1 to 3 days to read this book, not more than that, because you have a limited time. So we'll start. What you are going to read? Basics of computer and its usage. The first thing you are going to read is what is a computer. सबसे पहले you will study what's a computer. लेकिन it's not required. आपको कोई नहीं पूछेगा what's computer. So इसको समझने के लिए ये पढ़ना है. Then the functions of computer. Then you will study the features. Features को अच्छे से पढ़ लेना. स्क्रीन पे भी देख सकते हो क्या क्या फीचर्स है कंप्यूटर के. Then you will study about the history of computer. It's essential. आप स्क्रीन पे पेज भी देख सकते हो कि क्या हिस्ट्री थी कंप्यूटर की. हु वाज चार्ल्स बाबेज, व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स. देन यू विल स्टडी द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. देखिए जो कंप्यूटर की जनरेशन, यू हैव द 5 generations ऑफ द कंप्यूटर्स. यू विल स्टडी अबाउट द 5 generation ऑफ कंप्यूटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. Then you will study about the classification of computers. फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द साइज के हिसाब से आपके कितने कंप्यूटर है, बेस्ड ऑन द वर्क आपके कितने कंप्यूटर है, बेसिक ऑन द पर्पस आपके कितने कंप्यूटर है. यू विल स्टडी अबाउट द हाइब्रिड कंप्यूटर. यू विल स्टडी about all the types of computers which are there in the market. You will study about the super computers, etc. in this chapter. Then you will study about the components of computer. You have the 3 components: the input output unit, second is central processing unit, third is the memory unit. Input output unit is it's like this. देखिए आप जब देखिए इनपुट आउटपुट यूनिट इज इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अनटिल यू वोंट गिव एनीथिंग टू द कंप्यूटर्स. वो तब तक कुछ प्रोसेसिंग नहीं करेगा ना. सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनपुट. इनपुट के बाद यू डू प्रोसेसिंग. उसके लिए यू हैव टू स्टडी अबाउट द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. उसके बाद यू हैव द मेमोरी यूनिट. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये 3 स्टडी करने के बाद यू विल स्टडी अबाउट द हार्डवेयर्स. हार्डवेयर्स में आपको पता है आपके यहाँ पे दिया हुआ है पहले हार्डवेयर में आप स्टडी करोगे इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस में यू विल स्टडी अबाउट द कीबोर्ड, यू विल स्टडी अबाउट द माउस, you will study about the touch screen. You will study all those which are जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा इंट्रोड्यूस करते हैं. those devices are called the input device. You will see on the screen कितनी इनपुट डिवाइस है आपकी. Then you will study about पहले तो इनपुट हो गए. इनपुट के बाद कौन सी डिवाइस है? आउटपुट में आपका प्रिंटर आता है. You have the impact printers, you have the non-impact printers, you have the monitor, etc. ये भी आप हार्डवेयर में स्टडी करोगे. और इसके बाद you will study about the computer memory. It's important. You have the primary memory, RAM, ROM. Volatile memory कौन सी है आपकी? Non-volatile कौन सी memory है? You have the cache memory. You will read about that. Then you will study about the secondary memory. In the secondary memory, you are going to read about the hard disk. You will study about the floppy disk. You will study about the compact disk. And screen पे भी देख सकते हो आप कितनी secondary memory है और कितनी primary memory है. Then you have to study about the number system. देखिए आपके एग्जाम में ये अक्सर दिया गया होता है, ये इसको कन्वर्ट करो बाइनरी सिस्टम में. रीड अबाउट दिस इज इंपॉर्टेंट. इसको पढ़ लेना बिकॉज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है दैट इज 0101.
इसको कहते हैं बिट्स। यहाँ पे मेमोरी यूनिट में यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट ये बिट क्या है, बाइट क्या है, एक बाइट में कितने बिट्स होते, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते, एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट्स होते, इसी तरह गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। यू हैव स्टडी अबाउट दैट इन द मेमोरी। दिस इज, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यू विल बी आस्क्ड वन क्वेश्चन। देन यू विल स्टडी अबाउट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सी, आपका जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, first we read about the hardware, then computer software. Your software is of two types. One is the system software, second is the application software. इसके अलग अलग टाइप्स है, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स है। यू कैन ऑल्सो सी जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसके कितने टाइप्स है। दिस इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देन यू विल स्टडी अबाउट द प्रोग्रामिंग। देखो, प्रोग्रामिंग कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। यू विल स्टडी अबाउट द लो लेवल लैंग्वेज, यू विल स्टडी अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हमें लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमें चाहिए कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। यू विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। दीज में भी आपके एग्जाम में आएंगे। आपके एग्जाम में हार्डवेयर, देन इंटरनेट में यू विल स्टडी अबाउट द नेटवर्क्स। लाइक आपके पास लेन क्या है, वैन क्या है, पेन क्या है। Then you will study about the internet. You will study about the Windsurf, why he is called the father of internet. Then you will study about the internet protocols. Internet protocol क्या होता है. Then you will study about internet related जितनी भी things like www, web page क्या होता है, website क्या होता है, web browser, URL, domain name. You will study all the things related to the internet, like internet की history क्या है, etc. Then you will study about the computer security. सी, आजकल जो सबसे बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज एन एसेंशियल टॉपिक nowadays. You will understand that. Then you will study about the virus, different types of viruses. You will study about the Trojan horse. You will study about the spyware. इसके बाद you will study how to secure your computer from these things. इसमें आप स्पूफिंग वगैरह एटसेट्रा जितने भी आजकल इंटरनेट रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में आप स्टडी करोगे। इसके रिलेटेड देखना, if there is something current affairs, एक करंट अफेयर्स है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसमें आपको कुछ पूछा जाएगा लाइक फायरवॉल एटसेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट योर ये कंप्यूटर्स। डोंट गो सो डीप इन योर कंप्यूटर्स। सो जितना मैंने कहा इस पे फोकस करो। देयर इज अ बुक, आप या अगेन ये बुक स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज द ओनली बुक यू आर गोइंग टू रीड। डोंट रीड ऑल द बुक, रीड द लिमिटेड चैप्टर्स विच आई एम गोइंग टू। जितने भी मैंने टॉपिक्स कहे उतने ही पढ़ने। You don't have to go deeper in the computer. Thanks for watching my channel.